also important to give suggestions which may not become specific part of the resolution, which may not become a specific part of the resolution, but it is important to make those interventions as and when these things are discussed in public. I will start my intervention by claiming that these can be considered as suggestions or amendments as the leadership pleases. It is up to the leadership. Why? I find a certain kind of half-heartedness in framing the action program. But I know that the collective wisdom of teachers cannot be faulted in a cavalier manner. I also find certain omissions which can be easily included as part of our document and GBM resolution. I'll go with the omissions first. One, we have more or less clearly stated the question of physical education teachers, but we have missed the question of librarians, which used to be part of each and every DUTA document. So the parity that the librarians of the university and colleges demand as teachers in terms of appointment, in terms of position in the roster, all those things should be there as part of the I know. Library, again, I'm not saying that these are competent. Okay, these are not competitive categories, physical education teachers or librarians. What I'm saying is that in the GBM resolution, I think, we can definitely include our earlier demands about parity of librarians. That is point number one. Second, there is a problem. I think Ashwini ji pointed it out. You have not used 200-point cadre-based institution-wise roster anywhere. Without having that clarity in the document, I think it won't be fair. You're leaving a lot of space for interpretations. वही interpretations जो election के बाद arts faculty में सुनने के लिए मिला, ये बोल के कि 13-point roster लेके आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, ये वाला पोजीशन को जगह मत देना। इसीलिए बोलना पड़ता है कि 200-point cadre-based institution-wise roster, वो पहले आएंगे। वो जब पहले आएंगे, तभी आपके पास absorption का बात आएगा। और आपने absorption कैसे लिखा है? यही जगह interpretations और manipulations को देख के, यही जगह interpretations और manipulations को देख के, whenever you use absorption, I insist as a member and a part of the trade union body, you should include modalities. Modalities which will guarantee the backlog post in SC, ST and SC, appointments. Modalities which will not allow the administration to deny backlog post to SC, ST categories in colleges and universities. तो आप मेरे को complete करने दीजिए जो भी है। नहीं बोलो एप्रिसिएशन और मतलब डिप्रिसिएशन हम स्टेज के बाहर लेते हैं जी, ठीक है? स्टेज के ऊपर बात रखने का मौका दे दीजिए। ये वाला बात आप मोडालिटीज इंक्लूड कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, बिना मोडालिटीज का अब्सॉर्प्शन नहीं इंक्लूड होना चाहिए। अब्सॉर्प्शन ऐसा नहीं कि लिटिगेशन का मैटर बन के जो हमारा हक है वो हट जाएगा। अब्सॉर्प्शन के पहले 200-point cadre based institution wise roster आना चाहिए। ये क्लैरिटी में बता रहा हूं। चौथा पॉइंट, आपने 10% EVS रिजर्वेशन के बारे में कुछ नोट ही नहीं किया। 10% EVS रिजर्वेशन का मतलब है 25% increase in seats. We have been asking for increase in seats, more number of colleges, more posts, more infrastructure. आपको पता है कि जब OBC एक्सपेंशन 27% आया और 54% जब लागू हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए वो अभी भी आपके पास नहीं है। वो धोखा इसलिए करते हैं, वो दो तरफ का काम करता है। अपर कास्ट के मतलब पॉलिटिकल पोजीशन में ये बोल जाता है कि मतलब देखिए ये जो रिजर्वेशन है वो एक सोशल इवल है,
जबकि सोशल इविल वही कास्ट बेस्ड मेंटालिटी होता है या अपर कास्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज होता है, उसको आप मतलब एक्सपोज नहीं करते। आप बोलते हैं कि 27% रिजर्वेशन लेके आया, 54% जो एक्सपेंशन होना था उसका सेकंड ट्रांचे पोस्ट कहां है जी? हम तो हर डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि पूरे कॉलेजेस में सेकंड, हमारा डॉक्यूमेंट नहीं बोल रहे यार। अब मैं कुछ और बता रहा हूं, 10% ईवीएस रिजर्वेशन को बारे में इस डॉक्यूमेंट में जिक्र होना चाहिए। एक कैसे 25 I could not, okay ना okay leave it, ठीक है, I have made a like quick reading but that is not the point। 25% expansion के टाइम पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द बैकलॉग ऑफ ओबीसी एक्सपेंशन सेकंड ट्रांच ये सब मिलना चाहिए, आना है, अगर है तो बहुत बढ़िया। अब एक और चीज, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, जो फर्स्ट हमारा रेजोल्यूशन है, I condemn the loss of lives, I condemn the act of terror, but as a responsible trade union body, I also want a message of peace to be endorsed by the GPM. We are not going to get lost in competitive claims of nationalism. We know who have been part of the nation and who have betrayed the nation. So these matters are very clear. And when we know कि जवान के कॉफिन के दाम पे बेचने वाला या दाम में घोटाले करने वाला जब राज करता है यहाँ पे, उस सरकार के बारे में भी, उस सरकार की नीति के बारे में भी आलोचना रखने का टीचर के पास राइट है। और वो जब टीचर वो रेजोल्यूशन लाता है, you will not add fuel to fire or just make an empty resolution. You will also appeal for a message of peace, appeal for deep democracy, appeal for respecting the wishes of the people, whether they are part of Kashmir, India or Pakistan. That is a teacher's responsibility. I know that I am sounding a matter where many people who have made a certain kind of position as their political position may have a disagreement, but it is also my opportunity and right to express myself. So after that, I come to the action program. I find a serious lack of intensification. जब अगर कोई टीचर shutdown of the university बोलता है, that is not the shutdown that the government wants. The government wants a shutdown to destroy educational institutions. The government wants to limit education. That is what we have seen, especially from the Kapil Sibal regime and from the current government, BJP RSS का जो भी government अभी चल रहा है। तो education को खत्म करने के लिए shutdown मैं नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन अगर education को बचाना है, आपको ये वाला आंदोलन का जो रूप आप दिया है, suggestion ही है, amendment नहीं बोल रहा हूँ, चेंज करना है। आप 25 तारीख से 1 तारीख का पूरा वीक वो स्ट्राइक के लिए बनाइए। पहले 2 दिन जो नंदिता जी बोला कि मतलब क्लासरूम बॉयकॉट करके बाहर क्लास लगाना के कर लीजिए, लेकिन 27, 28 और 1 को कंप्लीट स्ट्राइक होना चाहिए और पूरा शटडाउन यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए शटडाउन होगा। ऐसा नहीं कि मतलब जो अपॉर्चुनिटी मुश्किल से लोगों को मिल रहा है, आपको पता है कि ओनली 20% GER है हमारे यहाँ पे, वो 100% नहीं है। ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं और इसीलिए अगर आप इंटेंसिफाई नहीं करोगे, मैं तो जो लीडरशिप है और जो हम लोग हैं, इंक्लूडिंग माय ऑर्गेनाइजेशन और माय ओन कलेक्टिव, हम सबका कमिटमेंट के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो वहां लगाना पड़ेगा। आप बोल रहे थे इलेक्शन का माहौल है, इंटेंसिफिकेशन इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन तो खत्म हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, 2 हफ्ते बाद आप शुरू कर रहे हैं। आई नो द डिफिकल्टीज, बट आप एक हाफ हार्टेड प्रोग्राम बनाया है। आप 25 और 26 को भी क्लासरूम बॉयकॉट वाला इसमें लाइए, 27, 28 और 1 को स्ट्राइक खुले आम सामने आके कोशिश कीजिए, तभी ये बात मतलब कुछ बनेगा। और अगर इस बार फरवरी और मार्च में ये क्लिंच नहीं किया, तो आप सोचिए जो जुलाई आएगा, रोस्टर का भी इश्यू आएगा, लोगों को निकालने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये सारा इश्यू, मार्च वाला क्राइसिस नहीं आएगा, ये बताने के लिए मेरे पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई बिलीव
I believe that we need to strike and clinch the matter in the month of February and March. If you are not ready for that, then we all are going to pay a very heavy price. Let us not fool ourselves. Let us not betray